Hello, dear students. Welcome to Concrete Civil Concepts. And in this video, we will be discussing our paper 2 Civil Engineering UPPSC. एंड इसमें मैं देखते हैं कि सारे क्वेश्चंस हमने मार्क कर लिए हैं. आप हमसे आंसर्स मिला सकते हैं. और पहला क्वेश्चन था आपका कि मैच द फॉलोइंग का था, और इसमें आपको पता है कि राजस्थान आपका गुरु शिखर बी इज़ 3, तो ऑप्शन आप सी मार्क कर सकते हैं. ए इज़ 4, तमिलनाडु इज़ डोडा बेटा. Then B is 3, Rajasthan is your Guru Shikhar. Nagaland is your Saramati, and Madhya Pradesh in Dhupgarh. Okay. Then second question is Leopold matrix is associated with environmental impact assessment method. Then third option question is the joint sitting of the Indian Parliament for transacting a legislative business is presided over by the Speaker of the Lok Sabha. Then the term of office profit has been defined by the Constitution. Option A is correct. While deciding any question relating to the disqualification of a member of parliament, the president shall obtain the opinion of election commission. Option A is correct here. Then seventh question is, as per the results of Swachh Sarvekshan 2020 announced by Ministry of Housing and Urban Affairs 20th August 2020, the cleanest city in Uttar Pradesh is Lucknow here, and so mark your option C is correct. And question 9 is Poshan Maha was celebrated by Government of India in the year 2020 is September. Okay, then option 10 skip. Then you may check with your internet. Then 12 check with your internet. Then yes, 13 is your option D is correct here. That is your Tharas is Uttarakhand. Then Todas is in your Tamil Nadu. Then Santhal is your Jharkhand, and your Gond is Madhya Pradesh. Okay, so option D is correct here. Next question, match the following again. That is your Nokrek is in Meghalaya. Then your Agast Malai is in Kerala. Then Nanda Devi is in Uttarakhand. Then Dehang Debang is in your Arunachal Pradesh. Okay, so option A is correct here. Then next question is state gets share of the revenue from customs revenue. Option B is correct here. Then which article of the Indian Constitution empowers Parliament to make law for implementing international agreement is Article 253. Then who appoints the acting Chief Justice of India is President in consultation with Chief Justice of India. Option D is correct here. Then 18th you may check with internet. 19th you may check. 5-star village scheme started by Government of India in September 2020 relates to postal service scheme. Option B is correct here. Then who won the US Open 2020 men's tennis singles title 14 September 2020? Alex Zverev. So option A is correct here. चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. वेलकम टू कॉन्क्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स अगेन. नाउ ऑप्शन क्वेश्चन 22 is you may check with the internet. Then 24th is author of the Dastane Mahib is was discussed about the Deen-e-Ilahi Akbar was Mohsin Fani. Okay, option B is correct here. Then 25th you may check with the internet. Then coming to your civil engineering questions. The first question is irrigation channel designed by Lacy's theory has mean velocity 1.5 दिया था. सिल्ट फैक्टर इज यूनिटी. हाइड्रोलिक मीन रेडियस निकालना था 5.625 मीटर आ जाएगा इसका. नेक्स्ट 20 हाइड्रोलिक जंप डेप्थ ऑफ टू साइड्स आर 0.4 मीटर एंड 1.4 मीटर. हेड लॉस निकालना था 0.45 मीटर आ जाएगा. y2 माइनस y1 होल के ऊपर 4 y1 y2 से निकल जाता है. कॉन्टैक्ट प्रेशर टायर प्रेशर और रिजिडिटी फैक्टर में रिलेशन होता है PC अपॉन P इज इक्वल टू R. Then 25th you may 29th you may check. Then 30th is design speed of traffic lane is 70 किलोमीटर पर आवर. थियोरेटिकल कैपेसिटी पूछी थी 1000 V/S होता है. यहाँ से आपका 828 आ जाएगा आपका थियोरेटिकल कैपेसिटी. देन कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस गिवन वेलोसिटी दी हुई है और फ्रिक्शन दिया हुआ था तो 464 मीटर इज ऑप्शन इज ए इज करेक्ट हियर. देन क्लासिफिकेशन फॉलोइंग आइटम्स आर कंसिडर्ड द सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ एयरपोर्ट. तो इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था विजिबिलिटी एट एयरपोर्ट साइट, आप मार्क कर सकते हैं इसको. देन द ऑर्डर इन विच रोड इज बिल्ट एज फ्रॉम बॉटम टू टॉप इज सब सॉइल होता है, सब ग्रेड सब बेस और बेस कोर्स. देन 34 यू में चेक. देन स्लीपर डेंसिटी का क्वेश्चन था. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 900 इज आंसर इज करेक्ट हियर. देन टाइप ऑफ कैम्बर विच इज बेस्ट सुटेड फॉर सीमेंट कंक्रीट पेमेंट इज I think it is straight line. You may check with internet also. So option A is correct here, straight line. Okay. Then which one is not a road pattern? Diamond pattern is not a road pattern. Option D is correct here. Then if the methyl orange alkalinity of water equals or exceeds total hardness, all the hardness is I think it is B, carbon hardness. You may check. Okay, but it is 38 is B. Then when wastewater is disposed into a running stream, 4 zones are formed
in which one of the following zones will be the minimum level of dissolved oxygen is zone of activity composition. B is correct here. Then your hair of human nose can remove all the particles of size greater than 10 micron is correct. 40th D is correct. Then 41th is your ग्रिड चैम्बर होता है आपका 2 मिनट्स के लिए. देन प्राइमरी सेडिमेंटेशन होता है 6 आवर्स के लिए. देन एक्टिवेटेड स्लज होता है 2 आवर्स के लिए. ओके. देन स्लज डाइजेशन होता है 20 डेज के लिए. ओके. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. बेस्ट सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन रैंडमली प्लान सिटीज डेड एंड सिस्टम. Okay, then your following type of transition curve is mostly used in Indian Railways cubic parabola here. Then 44 you may check with internet. Flexible pavement distribute the wheel load through a set of layers to the subgrade. Option B is correct here. Then 46 is I think 35%, but you may check. 47th is your population geometric increase method से पूछा था 101000. Then pH 4 दी हुई थी compared to pH 7 will be more acidic 1000 times. Then sludge volume index का क्वेश्चन था. 1 liter of sewage when allowed to settle for 30 minutes gives a sludge volume 30 centimeter cube. तो sludge volume index आ जाएगा 10. High COD to BOD ratio of an organic pollutant represent low biodegradability of the pollutant. 50 का B correct है. Then इसमें पूछा था which of the following treatment process necessary for removing suspended सॉलिड्स. तो कोगुलेशन सेडिमेंटेशन और फ्लोकुलेशन करते हैं हम. डिसइंफेक्शन ज़रूरी नहीं है सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए. तो आपका बी इज़ करेक्ट. और इफ़ द कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ वाटर देन कॉलीफॉर्म टेस्ट टू बी कंडक्टेड इज प्रिजम्पटिव टेस्ट और कन्फर्म कॉलीफॉर्म टेस्ट. बोथ 1 and 2 इज़ करेक्ट हियर. देन योर रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए आप निकाल सकते हैं, यहाँ निकाला नहीं है. देन ट्रिकलिंग फिल्टर डिज़ाइन के लिए आप हाइड्रोलिक लोडिंग रेट और ऑर्गेनिक लोडिंग रेट का इंपॉर्टेंस आता है. यहाँ पे आप 54 का बी करेक्ट कर लीजिए. देन 55 यू मे डू योर सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रनिंग स्ट्रीम में बी ड्यू टू योर डाइल्यूशन ऑक्सीडाइजेशन कोगुलेशन. ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. देन योर इफ द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर फ्लाइंग हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट दी हुई थी अबव बेस इज 5000 मीटर एंड इमेज ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 20 सेंटीमीटर दिया है तो आपको हाइट डिस्प्लेसमेंट 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा. देन परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम अ टेंजेंट टू जंक्शन ऑफ ट्रांजिशन का सर्कुलर L square upon 24 आर. 58 D is correct here. 59 you may do. 61 is do. Then if the this is your I think 63 and 64 you may do. Now 65 is in a vertical curve up gradient followed by downstream the rate of change of grade is इतना. वर्टिकल कर्व निकालना था I think 1600 मीटर आता है इसका, आप चेक कर सकते हैं. Then the 67th is the velocity distribution in a turbulent flow is a function of distance y measured from the boundary surface and the friction velocity unit is follows a logarithmic law. It is C here. Then your pipe is said to be equivalent to another if in both head loss and discharge are same. So okay, both C is correct here. 69th is C is correct. Then your channel designed by Lacy theory has mean velocity दी हुआ था सिल्ट फैक्टर यूनिटी हाइड्रोलिक मीटर 2.5 मीटर आ जाएगा. 70 A is correct. Then pressure drop per unit length of pipe in laminar flow depending on the velocity viscosity is equal to 32 mu VL upon D square. L नहीं आएगा आपका, B आएगा, D C आएगा ऑप्शन में क्योंकि डेल P अपॉन L दिया हुआ है, L से L कट जाएगा. Then ratio of pressure between 2 points A and B located respectively 0.25 meter और 0.75 meter दिया हुआ था. constant level of water run ratio 3 option is correct. Option B is correct here. Then a circular plate 1 meter diameter is submerged vertically in water such that the upper edge 8 meter below the surface. The total hydrostatic pressure on one side of the plate is 77 kilonewton. Mark your answer. D is correct here. Then when there is an increase in the atmospheric pressure, water level in well penetrating a confined aquifer does not change. So option C is correct here. Then 75 you may check. Then discharge per unit drawdown at a well is called specific capacity. Option C is correct here. Then 77 you may check. Then 78 is the observed annual runoff from a basin area 500 km square and 150 million meter cube, and the corresponding annual rainfall over the basin during same year is 750. Runoff coefficient is 0.4 here. Then 79th is Thiessen weights of 4 rain gauges A B C D river basin दिया हुआ था 0.15. इसका आंसर आपका आएगा रेनफॉल एट ए 6 centimeter. Okay, so you may do. And then your
geological strata between ground surface and water table are also known as vadose zone. So option C is correct here. Then 84th is the standard BOD 20 degrees centigrade compared to BOD ultimate 68%. Sludge bulking can be controlled by coagulation. Okay, so it is marked as B is here. Then coefficient of uniformity for filter sand is D60 upon D10. Option D is correct here. Here your following cause of decreased demand in water per capita consumption metering system यूज़ करते हैं. यहाँ से इनिशियल डी ओ फाइनल डी ओ के लिए बी ओ डी ऑफ द गिवन सैंपल निकालना था. 750 मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा इसका. देन आपका 89 यू में चेक इन जी आई एस द प्रोसेस यूज फॉर मॉडिफाइंग map features to make them clear reduce scale is known as topographical encoding. I think you may check with the internet. Then your option 93 streak is a mineral. Its appearance in thin is shown in polarizing microscope. You may check. Okay, then 94th is 2500 meter. It is flying height of the aircraft is. Then probable air observation के क्वेश्चन जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 16 आ जाएंगे आंसर हो जाता है. और यहाँ पे आपका देन योर टू स्ट्रेट्स ए बी एंड बी सी हैविंग द बियरिंग ऑफ 70 डिग्री एंड 120 डिग्री. तो दे आर कनेक्टेड बाय सर्कुलर कर्व. डिफ्लेक्शन एंगल 120 डिग्री है. फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशन एग्जिस्ट. वॉल वाई इज इक्वल टू 0 पे यू इज इक्वल टू 0 वी इज इक्वल टू 0 दोनों होगा. हाइड्रोलिक रैम प्रिंसिपल यू में चेक. देन 101 इज यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल एग्जिस्ट व्हेन फ्लो इज स्टडी एंड द चैनल इज प्रिज्मेटिक एंड डेप्थ ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट अलोंग द चैनल. ओके, सो 101 का सी इज करेक्ट हियर. देन हाइड्रोलिकली एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल रेशियो ऑफ विड्थ टू नॉर्मल डेप्थ इज 2 आता है. ओके, देन योर एज डेप्थ ऑफ इमर्जन वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीजेज लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर is I think B comes closer to the center of gravity. Okay, so option B is correct here. Then your hydraulic jump occurs when flow is supercritical and downstream depth is adequate. Option C is correct. Then in a model experiment with wear, if the dimensions of the model wear are reduced by factor K, flow rate पूछा था उसने, K की पावर 5/2 होता है. Then differential manometer used in venturometer, इसका आंसर 20 आएगा. Option C is correct. Then two identical pipes of length L, diameter D, friction factor connected in parallel. Then single pipe diameter D, under root 2L. Then rise in pressure you may check with the internet. Highest velocity of flow of water, viscosity 0.02 is दी हुई है, 400 centimeter per second. Then when an irrigation canal is taken over a drainage channel, the crossing is called aqueduct होता है. Then Lacey is cover depth for a stream carrying a discharge 3 cubic per meter width having silt factor 2.64 आ जाएगा इसका आंसर. Then discharge passing over an Augie spillway per unit length, its apex is h के power 1/2 it is. Okay, or h के power 3/2. So I think h के power 1/2 is correct. Lysimeter is for evapotranspiration. Then your 8.64 B upon D. Then A115 is use of unit hydrograph 500 kilometer square. You may check. Khosla theory keep the structure safe against piping. Exit gradient is 0.15 to 0.20. And lateral infiltration is the major drawback in the double ring infiltrometer. Okay, so isolated storm is represented by single peak here. And deficiency, I think this question should be revised. And it is in CBR test load is sustained by the remolded soil specimen is 120 kg. So it is 1370 से डिवाइड मार देंगे 5.84% आ जाएगा. देन टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व दैट इज जनरली फॉर हैंड रोड के लिए स्पायरल होता है. कॉमन प्रैक्टिस टू डिजाइन हाईवे टू अकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ 30th आवर. सेफ स्पीड ऑन ट्रांजिशन कर्व ऑफ ब्रॉड गेज ट्रैक कैन बी कैलकुलेटेड एज 4.35 √r-67. Then it is your maximum limit of super elevation on broad gauge track in India 76.2. You may refer. Then this is your option C is correct. Indian horizontal curve निकालना था 60 किलोमीटर पर. रेडियस निकालना था आपको 130 मीटर. ओके, सो प्लीज़ डू कंक्रीट सिविल कॉन्सेप्ट को आप सब्सक्राइब करिए और पेपर 1 का भी मैं आज अपलोड कर दूंगा आंसर की. सो थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट एंड द कट ऑफ विल बी final cut off will be your 450 plus. Okay, so do subscribe this concrete civil concepts. Thank you.